conduct a discussion session where a participant can put in their challenges that they're facing in marketplace to scale up their business, in regards to strategy, in regards to sales, in regards to team, and why not to have a face-to-face discussion with the expert. So this is the whole intention of creating this platform called Chai Pe Charcha. I would urge and request each and every participant to start introducing you by your name and where have you joined in, and also start putting up your questions, the challenges that you're facing and would like to discuss with Dr. Yogesh Pawar. And we are happy to take questions sequentially. I have already started receiving few questions, by the way, sir. Before taking up the questions, I would like you to help people understand about that what is SIL, and then we can actually start taking up the questions. Sure. Would you want to get people in the panelists so that they can also ask questions? Yes. Yeah. So that's the intention behind it. But I would request each and every participants, we are promoting you to the panelist side. Please do switch on your videos so that we can see each other's beautiful faces. Yeah, we can interact with human beings and not don't feel that we're talking to machines. But so thank you. I think we've received certain questions. After COVID, funding is the main problem. Okay, so let's discuss that. Sir, I want to know how to plan SOP for company. Okay, wonderful, very nice. So we'll take one question at a time, and we'll keep, so my request to all of you is, please keep posting your questions. Please keep posting your questions. Please keep posting your questions because that's very important so that we can have an interaction. So while people are getting transited to the place where we say they are panelists, let me also quickly introduce the company that I represent. My name is Dr. Yogesh Pawar. By education, I'm a predictive psychologist. I started this company around 10 years back. The first 2 years were more on research of what happens and what could be the possible reasons of people scaling up their businesses. And hi, Jambu, thank you very much for joining in. Right. So why what could be the possible reasons of why people are scaling up? After that piece of 2 years of working with close to 48 businesses, learning from them, writing case studies about that, understanding the P&Ls, all of that, and all of them were SME businesses. We derived a first course called Entrepreneurial Development Program, and that became the stepping stone of what SIL is today. And for last 8 years, I have been running this course called Burning Desire. So if you, I don't know, this is how it is. If you see my backside here on the screens, it's called the Burning Desire, a game of scaling up. Now, this workshop, while we designed, it is not about what Yogesh feels is right, but is a pattern of successful businesses where you understand, if you take this process, if you understand this process, if you learn this process, the probability, I'll repeat, there are two words very, very important for all of us to learn. The probability of you scaling up the business is high. And second very important element is the possibility of you doing will only happen if you educate and invest in yourself. The probability, so you have to work on possibilities so that the probability increases. And that's how the game of scalability begins with you. It does not stop at you. It begins with you. Then it goes to your teams, then it goes to your infrastructure, then it goes to your people, then it goes to your money, all of that. So unless and until you do not create a possibility, the probability will never come out. I'll repeat, unless and until you do not create a possibility, the probability of something happening will never happen. Okay, so with this, we began a journey. Today, close to 18,000 businesses have got trained through us. More than 1,000 projects have been completed. There are a lot of projects that we do across the country, and we've been fairly successful in the way that we have scaled up the businesses.
There are certain people who have enjoyed bigger turnovers, better bottom lines, bigger teams, better infrastructure, and are able to manage certain things. But as I always say, that every 20, 25 crores, the game changes. I'll repeat, every 20, 25 crores, the game changes. And I think we as a team at School of Inspirational Leadership have been able to witness that growth along with a lot of businesses. So let's go ahead and start off. So are you going to guide me, Yes. Utkarsh, with questions, and then we can start off? I think there are a lot of questions that are already coming up. So the first question is from Mr. After COVID, funding is the main problem. Yeah. So this is not a question. This is a statement. This is a statement. I would recommend you to ask a question. Okay. Okay. Let's look at. So this was asked by Vibhuti Gopal. So I think this is a statement, Vibhuti ji, and my recommendation would be to ask a question. You can ask this question on the chat box or in the Q&A session. We move on to the next one. What is the next one, Surendra? Surendra is asking, right? Yeah. I want guidance in digital marketing, time schedules. I have new ideas but can't implement them promptly. So Surendra ji, can I, there is a question that I have in mind, which if you are able to answer that question to yourself, probably this will be sorted out. The first question that you have to ask yourself is, do you know how your company will look like in the next 5 years? Do you know how your company will look like in the next 5 years? If you are able to answer this question, then the possibility of finding the answers for the given questions will be there. So if you see, you say I want guidance in digital marketing. Let me tell you, you search Google, you get 1 lakh digital marketing agencies today. You throw a stone, you get a digital marketer. Okay, so but still, why haven't you been able to do that? Because lack of decision making. Let's look at time schedules. When we say I'm not able to manage my time, which also means is I'm not able to manage my priorities. मैं अपनी priority को manage नहीं कर पा रहा हूं. Priority को manage इंसान क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो decisive नहीं होता. उसे हाँ और ना कौन सी चीज को कहना है ये पता नहीं है शायद. ओके, या उसके बारे में सोचा नहीं है, उसके बारे में कुछ लिखित नहीं है. Right? I have new ideas but can't implement it properly. Now, are those ideas in line with the vision that you have for your future? Only then you will be consistent, Surendra ji. Okay, so my recommendation to you would be answer this one question. Where do you see your company in next 5 years? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है और उसमें आपको अगर मदद चाहिए, of course we will be there with you. But अगर वो आप खुद कर पाओ तो इन सवालों के जवाब भी आपके पास जरूर होंगे. I hope I have been able to answer the question, Utkarsh. If there is any question, Surendra ji, you can unmute yourself and you can ask. I give you next 30 seconds. Thank you, sir. Wonderful. I hope मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. So the next question is from Mr. Santosh Kulkarni. Santosh ji is asking that attrition is becoming huge problem for all the companies, including MNC. How we can manage this period? So I am not seeing this question. Okay. Attrition is becoming a huge problem for all companies, including MNCs. How can we manage this issue? Santosh ji, first question: Is it your problem also? Is it your problem also? Do you have a manpower planning with you? दो सवाल है, सवाल समझ लीजिए. पहला सवाल यह है कि क्या आप दुनिया में प्रॉब्लम है तो वो अपना प्रॉब्लम डील कर लेंगे. क्या ये प्रॉब्लम आपको भी है? ये सबसे पहला सवाल है.
क्योंकि दुनिया का प्रॉब्लम शायद मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे आज सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपको जरूर जवाब दे सकता हूँ। सो पहला जवाब है, क्या आपके पास अगले 3 साल में आपको जितने लगने वाली मैन पावर है वो आपके पास उसका गणित है क्या? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, do you have a minimum and a maximum experience that is required for every role? Third, if 50%, 60% of your manpower is blue collar manpower, are you investing in automation and systems? Fourth, do you have a measuring and monitoring system for your people? क्योंकि जब तक आपके पास ऐसी सिस्टम नहीं है जो लोगों को, आपके पास रहने वाले लोगों को ये नहीं बताती कि वो इस संस्था में अगले 10 साल तक ग्रो कर सकते हैं, तब तक अट्रिशन होता रहेगा, तब तक लोग छोड़ के जाते रहेंगे। जब आपने व्यवसाय शुरू किया था संतोष जी, तब आपका लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, मैं 10, 15, 20 लोगों को कंट्रोल कर पा रहा था अपने ऑरा से, अपने विश्वास से, पर्सनली उनसे बात करके। पर जब जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ना शुरू हो जाता है, वो स्कोप जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वो निकल जाता है। और जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल निकल जाता है, वैसे आप देखोगे आपसे जो पर्सनली जुड़े हुए लोग हैं वो छोड़ के नहीं जा रहे, पर जो नए लोग जुड़ रहे हैं आपसे, उनका अट्रिशन ज्यादा है। और उनको वो अट्रिशन कम करने के लिए यू नीड टू हैव a right system, a process that tells them उनको क्या चाहिए। जैसे आपको ग्रोथ चाहिए, वैसे ही आपके लोगों को भी ग्रोथ चाहिए। अगर आप उनको ये बता पाते हो लिखित स्वरूप से कि अगले 10 साल अगर आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बन रहे हो मेरी कंपनी में, तो आप एक जनरल मैनेजर बनने का प्लेटफॉर्म मैंने आपको दे दिया है, आप जितना करोगे आप उतना पहुंच जाओगे। अगर ये सिस्टम मेरे पास नहीं है और उसे मेजर और मॉनिटर करने का सिस्टम, एक तो पहले तो प्रोसेस हो गया, और उस प्रोसेस को मेजर और मॉनिटर करने का सिस्टम नहीं है, तो अट्रिशन होगा जरूर। तो ये हो गया एक एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। जैसे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देने वाला हूं। पीपल हु आर फ्रॉम बॉम्बे और मुंबई मस्ट हैव जॉइंड, देयर इज अ प्लेस इन मुलुंड कॉल्ड किड्जेनिया। ओके, किड्जेनिया। अब किड्जेनिया करता क्या है, ये एक बच्चों का थीम पार्क है। लगभग एक किड्जेनिया में 300 से 350 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस बच्चों को सिखाए जाते हैं और उनसे करवाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर का क्लिनिक भी है वहां पे, और वो बच्चा डॉक्टर बनता है, पूरे दिन भर खेलता है वो बच्चा वहां पे। तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उस डॉक्टर के क्लिनिक को मॉनिटर करने के लिए जो बंदा है वो लगभग 19 से 22 साल के बीच का होता है। ओके, वो गेम है बेसिकली, इट इज नथिंग एल्स, इट इज गेम। तो वो 19 से 22 साल का लड़का दिन भर 6 दिन 8 घंटे लगभग 6 साल के बच्चों से लेके 12-15 साल के बच्चों को संभाल रहा है। अब अगर देखोगे, मतलब थोड़ी मजाक की बात है, पर मैं अपने बच्चों को भी अगर 8 घंटे संभालूंगा जो 12 साल का है, तो मेरा दिमाग फट जाएगा। ये तो माँ ही है जो संभाल पाती है, राइट? तो ऐसे जब रोज करना पड़ेगा, तब अट्रिशन लेवल उस बिजनेस का उस सेगमेंट में ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। तो अगर मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूं जहां पे अट्रिशन, जैसे मैं रिटेल सेगमेंट में हूं, मैं रिटेल सेगमेंट में बिजनेस कर रहा हूं, मैं किसी बिग बाजार में हूं, मैं किसी मैं सेल्स में बहुत मेरे को काम करना पड़ता है, मेरे को रोज मार्केट में जाना पड़ता है, तो ऐसे बिजनेसेस में उन डिपार्टमेंट्स में अट्रिशन होगा। उसे मैनेज करने का तरीका एक वर्ड है, आप इसे लिख के लीजिए, उस वर्ड का नाम है एंगेजमेंट। मैं 365 दिन में से 52 दिन छुट्टी, अगर मैं संडे छुट्टी पकड़ता हूं और 20 दिन छुट्टी उसकी घर की छुट्टी होती है, तो लगभग 72 डेज की छुट्टी 365 दिन में, एवरेज आउट द मैन इज वर्किंग विथ यू फॉर 240 to 45 डेज। मेरे पास
45 दिन उसे एंगेज करने के लिए क्या मैकेनिज्म है। अच्छा, ये सब करके भी जरूरी नहीं है लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे या अट्रिशन नहीं होगा। अट्रिशन होगा, but उसे minimize. There are some risk in business that you cannot eradicate, but through a process or a system you can reduce it. आप उसे reduce कर सकते हैं। Okay, so I hope संतोष जी, मैंने आपके सवाल का elaborately जवाब दे दिया है। इसे पहले चेक करना पड़ेगा आपका, मैं इसे रैप अप कर लेता हूं। पहले चेक करना पड़ेगा आपका मैन पावर प्लान, हायरिंग प्लान है क्या, अगले 3 साल का प्लान है क्या, उसका मिन मैक्स सैलरी, एक्सपीरियंसेस, उसकी एजुकेशन लेवल्स, ये सारी चीजें हैं क्या आपके पास एक हायरार्की है कि हर बंदा जब ज्वाइन करता है उसके बाद उसकी ग्रोथ प्रोसेस कैसी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप कौन से सेक्टर में हैं जिस वजह से अट्रिशन उस डिपार्टमेंट में या किसी जगह पे ज्यादा है, वो चेक कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। अगर अट्रिशन जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा है, आप कोशिश कीजिए वहां पे ऑटोमेशन या सिस्टम्स लगाने की। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि ये सब करने के बाद लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बट व्हेन दे लीव यू, let me tell you, when they leave you, they will not unnecessarily do backbiting for you. मतलब आपके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, ये बढ़िया कंपनी है। That is also being a good way of being a good brand ambassador. और ये सब करने के बाद अगर आपको वो 245 दिन का गणित है आपके पास कि आप अपने लोगों को एंगेज कैसे करते हो। सिर्फ बर्थडे, सिर्फ साथ में खाना खाना डज नॉट मीन एंगेजमेंट। सिर्फ केक बांटना, हैप्पी बर्थडे बोलना इज नॉट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इज फार बियॉन्ड दैट। Okay, so my humble request to all my SME friends is, don't take the function of human resources and human resource in the same, same levels. Human resources is a function and human resource is a human being. In order to manage the human being, you need human resources. So human resources मतलब सब कुछ आ गया, राइट? आपके लेथ पे काम करने वाला ऑपरेटर या आपकी सीएनसी पे टर्निंग मशीन पे काम करने वाला ऑपरेटर, ये ह्यूमन रिसोर्स है। आपने उसे दी हुई मशीन, ये ह्यूमन रिसोर्सेस है। सो हम बहुत बार जब लोगों के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी गलतियां कर लेते हैं when we look at human beings as resources. Okay, so I hope I have been able to answer. You can please confirm, Santosh ji, by unmuting it. Can we move on to the next question? So the next question is from Mr. Jambu Champawat. जम्बू जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा अपना सवाल पूछें, बिकॉज योर क्वेश्चन इज आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड logistic competition fluctuation in industry and economy, BS4 BS6. Okay, I'll just introduce myself first. Hi everyone, this is Jambu here from HLSL Logistics. We are in transportation business, basically logistic business. In that, like, we provide services to the major automobile industries, right? But if you look at last 3 years, a very high fluctuation in automobile industry is there. Correct. And whatever the asset we have made for, because we have made the asset for them, is very dedicated, and these vehicles cannot be deployed to any other industry. Like if for two-wheeler industry we have made vehicles, it will be deployed for two-wheeler only. It can't be deployed for container or any other segment, basically. So last 3-4 years or even 5 years after like demonetization or like the fluctuation in industry is like anything, because there is no certainty कि market कब ऊपर होगा कब नीचे होगा, and utilization of asset is not there. Then BS3 to BS4 happened, BS4 to BS6 happened. मतलब in all the phases cost has increased, asset cost has increased, but freight remains same. No, not a single manufacturer has increased the freight for that, and because of the competition, fleet is more, and like supply demand, if we can say supply demand, like supply is more and demand is less. So either not a single transporter can be demand for higher of the freight.
because vehicles are like available in 1:5 ratio. And Correct. at the same time, economy is also like in COVID phase, diesel prices and like other factors which are increasing the cost, but freights remain same. So in that situation, what we should do, like how to manage the things? That is my major. So let me tell you what is this stage called as. This is called the stage of creative destruction. आप अगर पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखोगे, आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री को देख लिया, आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लिया, आपने एजुकेशन रादर ऑटोमोबाइल चल रहा है, आपने एजुकेशन इंडस्ट्री को देख लिया, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लिया, ये सारी इंडस्ट्रीज एक एस कर्व को जंप करती है. अब एस कर्व क्या है, ये शायद मैं इस सेशन में नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि वो लंबा है, बट ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस कर्व. Now realize that everybody related to the automobile industry is going to get impacted. Okay, if you really notice, जब freight, जिस तरीके से freights या standardization हो रहा है, the rate of your freight will never get impacted in a positive way. It will always get impacted in a negative way. Now why? Because the cost of travel is not going to change, it is only going to go up. But companies want to make money, and the freight aspect of it lies at the late entry of that entire value chain. अब value chain का मतलब क्या है? आप सोचिए, गाड़ियां ऑलरेडी बुक होके फैक्ट्री से निकलती हैं. Do you agree? Yes. फुल पेड है, वो ऑलरेडी सर्विस सेंटर, वो जो भी ओनर्स हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, उन्होंने खरीद लिए हैं. सो इसका मतलब आप ऐसे बिजनेस में हैं जो बिजनेस उस पूरे वैल्यू चेन के एंड में आता है. एंड देयर इज वन स्टेटमेंट, आप प्लीज उसे लिख लीजिए. द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर इज लीस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. मैं वापस रिपीट करूंगा, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर इज लीस्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. सो आपको एज व्यावसायिक आपको यह सोचना पड़ेगा अभी कि मैं किस तरीके से उस वैल्यू चेन में ऊपर जाऊं. ओके, रादर बिकॉज एक्सटर्नल इतनी हर्डल्स हैं कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, वो आपके स्कोप के बाहर है. यू हैव टू सिट इनसाइड and start thinking कि मैं value chain के ऊपर कैसे जाऊं. True. Is that okay? Yes. Only then you will be able to solve the issue that for your business. See, you cannot solve the issue of automobile industry freight going up. Absolutely. But you can solve the problem of how your business can scale up, how your business can be more profitable. Is that making sense? Yes. Great. 100%. Thank you. Yeah. All right, we have the next question. I think you're on mute. Sir, बस यही क्वेश्चन है बस. That's all. All right, okay. Thank you. How to plan SOP and how much is it important for the company? So it's a very motherhood statement question, but I think Vibhuti, it is, unless you do not have a procedure of doing something, let me take this question from a 30,000 feet. दुनिया में झगड़े होते ही तरीकों के वजह से हैं. ओके, अगर तरीका एक है तो झगड़े बिल्कुल नहीं होते या तो कम होते हैं. एसओपी उन तरीकों को सेम करने का एक प्रयास होता है. सो जब आप एक एसओपी लिखते हैं, आप लोगों को ये बता रहे हो आपकी कंपनी में कि हम सब ने मिलके इस तरीके से काम करना है. सो अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव अ एसओपी, even if you're making money, you will not earn money. You will not earn money because आप कहोगे मेरा 20 करोड़ 25 करोड़ का धंधा है, पर यार 2 करोड़ अकाउंट में नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट लीकेजेस आपका प्रॉफिट खा लेते हैं. और सॉफ्ट लीकेजेस को बचाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो मैं हमेशा सबसे कहता हूं,
वो है डिसिप्लिन। एसओपी लोग, एक तो पहले तो वो जब तक एक्सीडेंट ना हो तब तक एसओपी लिखते नहीं है। अच्छा, लिखने के बाद उसे फॉलो नहीं करते क्योंकि आदत नहीं है। अच्छा, आदत लगाने के लिए खुद को मारना पड़ता है जोर जोर से, अपने लोगों को जोर जोर से बोलना पड़ता है, बार बार लगातार करना पड़ता है। इससे लोग थक जाते हैं, और जो थकते हैं वो लगभग 80% लोग होते हैं, 90% लोग होते हैं। जो नहीं थकते वो 10% स्केलेबल कर जाते हैं। सो ये जो सवाल है आपका कि एसओपी कितना इंपॉर्टेंट है, तो एसओपीज, there are 4 words I'll tell you, and you know, Vibhuti, and for the rest of the people, there are 4 words. First is your strategy, second is your people, third is your execution, fourth is your cash. ये जो third word है ना, execution, execution का मतलब है discipline. Discipline का मतलब है whether you like it, whether you don't like it, you do it. That's discipline. Anything that is in the vision. So अगर SOP लिखी गई है तो उसे साम दाम दंड भेद से इंप्लीमेंट करना, ये आपका कर्तव्य बन जाता है। सो एक तो एसओपी लिखने वाला बंदा कितना क्वालिफाइड है, सबसे पहले तो ये चीज, क्योंकि गलत एसओपी तो नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि उसके गलत रिजल्ट्स निकलेंगे। दूसरा, क्या आपकी पूरी टीम, इसको चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस कहते हैं, क्या आपकी पूरी या वो लोग जो ये एसओपी यूज करने वाले हैं, क्या वो इसमें यू नो उन्होंने सहभाग लिया हुआ है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ये सवाल पूछ लीजिए। जब लोगों को मिल के आप एसओपी बनाते हो तब वो एसओपी इंप्लीमेंट होने के प्रोबेबिलिटी, वापस कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। पर अगर आपने उसके पॉसिबिलिटी पे ही क्वेश्चन उठा लिया तो प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बनने वाली। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन विद। ऑलराइट, हाउ टू सर्च manpower, skilled manpower. My question to you here is, if you want anything on Google, how do you search? अगर आपको गूगल आपको एग्जैक्टली कब इंफॉर्मेशन देता है, आपको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन तब देता है जब आप उसको एग्जैक्टली सही सवाल पूछते हो या सही स्टेटमेंट डालते हो। इस तरीके से अजय जी, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन, सो मैं आपको ये शायद चार्ट बोर्ड पे बना के बता देता हूं ताकि आसानी हो जाए सबको समझने में। ये देखिए, इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सो इसका ऊपरी लेयर जो है ना, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। इस जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे आपके पास होना चाहिए स्किल मैट्रिक्स, उसके नीचे आपके पास होनी चाहिए कॉम्पिटेंसी, उसके नीचे होना चाहिए आपके पास वैल्यूज, अगर आपकी कंपनी की संस्था की वैल्यूज डिफाइंड है, उन वैल्यूज को पकड़ के आप एक कॉम्पिटेंसी का बंच बनाते हो। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, उसको भी डेफिनेशन दे देता हूं आपको। माई एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ टास्क विद सर्टेन बिहेवियर्स। तो कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ स्किल होती है, ये जब मिक्स होते हैं तब एक कॉम्पिटेंसी बनती है। जैसे लीडरशिप एक कॉम्पिटेंसी है। सो लीडरशिप को दिखाने के लिए बंदे के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बंदे के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन एमटेक होना चाहिए, बंदे के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बंदे के पास टीम वर्किंग की एबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा मिलके एक लीडरशिप कॉम्पिटेंसी तैयार होगी। अब इस लीडरशिप कॉम्पिटेंसी को लेके वो कौन से जॉब में जाने वाला है उसका स्किल मैट्रिक्स होना चाहिए। वो होने के बाद उसका जेडी तैयार होता है। अब हम गूगल से कितना भी कॉपी कर ले, हम किसी भी हम कहते हैं यार वो कंसल्टेंट लगा दिया, कंसल्टेंट कर देगा जॉब डिस्क्रिप्शन, पर वो कितना भी कंसल्टेंट लगा दे, ये अंदर वाली चीजें ये किसी तीसरे कंसल्टेंट को मालूम नहीं होती। इसीलिए आपका काम क्या है कि उन कंसल्टेंट के साथ बैठ के ये सारी चीजें करनी। ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये आपको बार बार नहीं करनी पड़ती। अब अगेन, जब आप इस तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो तो आप ये देखोगे
कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आप लिख लीजिए पेन पेपर से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपके हायरिंग का स्ट्रांग होता है। तो ये जो रिस्क हमेशा लगता है कि यार हम अगर ले लिया और बंदे ने काम नहीं किया तो क्या, ये रिस्क कम हो जाता है। ओके, I hope I have been able to answer your question. So the next question is from Mr. Just give me a moment. I think it is Pradnya. Pradnya, correct. I have a branding and digital marketing agency. Every year team appraisal is happening, but retainer clients don't give increment, and if we ask, they don't consider. What is the right strategy to ask for yearly increment from the client? Are you adding value? If you do what you're doing and expecting more money from them, they're not going to give you, no. Simple. In fact, if you're doing the same thing, your cost should reduce. Nothing wrong with it. What is the value addition that you're giving for asking money? Okay, Pradya, I hope it was straight and easy to understand. So Yes, people will yes. not pay you for the same thing. I am paying 100 rupees for today, 100 rupees today for this mouse. There is no reason that I will pay 150 rupees for this mouse. So the scope of work keeps on increasing. So once you agree, So once you know that your scope of work is increasing, are you making it in notice with the people? And if you are in service business, let me tell you, if you're in service business, it is very important to document things. If you have a good, strong documentation, you will see that things are becoming better. Third, while you ask for price point higher, please make sure that you're adding more value than what you're giving them, what you're asking for. Unless and until that is happening, you will not get a price increase. okay. So you mean to say that we need to document the things and present, and also put them the forecast of like how we'll be taking it forward. Correct. All right. Yeah. Thank you. Where have you joined us from? From Pune. All right. Okay. Fair. Thank you very much for joining. Thank you. All right. Okay. So the Santosh, next- except automation. Sorry. Utkarsh, go ahead. Sorry. Yeah. So the next question is from Mr. Vasant Mudulkar. First of all, Vasantji, how are you? Just to give a reference, Vasant Mudulkar sir happens to be our old participants who have experienced SIL. So Vasant sir is wanting to understand that how to manage core team and how to keep them motivated. Okay. So how to manage core team and how to keep them inspired and motivated. Right. Vasantji, just ask one question. Are they aware about the vision that you have in line? Point number one. Yeah. First question. Second question, is it also their vision? Okay, because their vision is something else and your vision is something else, then it's not going to work. Third, yeah, go ahead. Well, the vision is very clear. Vision is very clear for everybody. It's not in my mind or not only in my computer. It is written all over in our factory with consultation to them only. One thing. Another thing is that the goal setting has been done, and goal setting has been done with their consultation only. It has not been, I have not forced them to take this goal or we want to reach there or whatever it means. Go ahead. Keep So, talking. Yeah. So that is the question. I really don't know. It's draining a lot of energy on this. Keep them inspired, keep them motivated, or what you told earlier. Okay, can I be a little, because I know you, I can be a little straight to you. Is that possible? Please, okay? please. You know my habit, no? Yeah. It's always so. Good, If you say that the vision is written everywhere and everybody knows that it is in their consultation, okay, and then you're facing challenge in motivating them, okay. Yes, sir. So these are two opposite things to happen. Okay. So only two things here. One, either they have agreed to that vision under certain circumstances which they don't want to,
or they have not understood it. So anybody, any human being only has 3 challenges when it comes to performance. Okay, there is a skill, there's a knowledge, attitude, okay, and out of this gets created is habit. So what you have to ask yourself is, ये सब करने के लिए इनके पास स्किल है क्या? ये सब करने का इनके पास नॉलेज है क्या? ये सब करने का इनकी इच्छा है क्या? मोटिवेशन है क्या? एटीट्यूड है क्या? अगर वो नहीं है तो इन तीनों में से कुछ कोई भी चीज नहीं है ना, तो वो बर्ताव में दिखाई देगी. Okay, now what should an entrepreneur, rather not forget about an entrepreneur, but what should the company system do? System honi chahiye usme. The first system that you do is you retrain them. It has to be a fair game to everybody. You retrain your core team and say, okay, this is where we want to go. Now, unfortunately, in order to let it be handled by somebody, because even if I'm a doctor, I'm a psychologist, and if I go mad today, I'm not going to manage myself. I'm going to ask somebody else to do it. So let the right man do the job. Whoever you feel would be the right man to do the job, get that done. Point number 1. Point number 2 is re-coach them. Now, when I say re-coach, unless you finish retrain, don't go to re-coach. Now, what do you mean by re-coach? You identify certain people, okay, who go into a certain way of working on their developmental path. Third thing, you realign them. शायद ऐसा हो सकता है कि उनको आप चाहते हो वो काम उनसे कराना, वो नहीं चाहते वो काम करना, क्योंकि अच्छा ऐसा भी नहीं उनको नहीं आता है, पर उसमें मजा नहीं आता. So they don't want to do that job. It's not about whether they know that job or not. They don't want to. Why? Because they said, यार ये तो मैं 10 साल से कर रहा हूं, मेरे कुछ अलग चाहिए, मेरे कुछ नया चाहिए. So you realign your workforce. The last piece is replace. Now this, unless and until you don't do first 3 steps, don't go to the 4th step. Now the question that comes to a lot of entrepreneurs at your age, maybe you must be running your business for 20, 25 years, and your core team must be there with you for 5 years, 10 years, 15 years. तो दिल का लगाव भी होता है ना? But let me tell you, loyalty cannot give food. Sorry, it's a tough statement that I'm using. Loyalty is very, very important. But in order to be loyal to one employee, you are creating a culture of disloyalty for the rest of the teams. You are not telling people that performance is respected. You're not telling people that we are progressive in nature. So if it is core team, only if it is core team, I'm assuming that that team is there with you for a good amount of time. And that exactly probably, we हम मजाक में कह देते हैं, लोग अभी granted ले लेते हैं. अब वो granted क्यों लेते हैं? या तो structured नहीं है इसलिए, या तो training नहीं दी गई कि अगले level पे पहुंचना कैसे है. Right? I get recruited in army. If I want to be a commando, I go for a commando training. Just because I've got recruited, मेरे को जंग पे नहीं भेजते. So I got to keep upskilling, ना? So this is how the method flows. और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, इससे उस संस्था में आदत बनती है. Just keep that in mind. So ask yourself today, what have I, is there something that I need to do more for my team, or I have to do for myself so that I could do better for my team? Is that okay? All right. Thank you, Asanji. Next question, please. The next question is from Mr. Vishesh Pandya. Vishesh ji is wanting to understand, sir, education sector के लिए teaching staff की जरूरत के लिए कोई एजेंसी हेल्प कर सकती है क्या? हाँ, स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप.
Thank you so much, sir. विशेष जी जैसे मैंने आपको आई थिंक आप राजस्थान से ज्वाइन किए हैं ना, बराबर है? जी हाँ सर। मैं आपको उत्कर्ष, हमने जो अभी हमने उड़ीसा के जिन स्कूल्स के लिए जो कुछ किया हुआ है, आप प्लीज भेज दीजिए उनको। विशेष जी से हम वापस बात नहीं कर पाए। विशेष जी, हम उड़ीसा में बहुत स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं अभी, वो आपको भेज देंगे और वो पूरा मॉड्यूल, टीचर्स का पूरा मॉड्यूल भेज देंगे। हमने बिहार और उड़ीसा शुरू कर दिया है, सो राजस्थान में भी करेंगे, जरूर करेंगे। सॉरी, मैं जानता हूँ मेरा झुकाव इस सारी चीजों के वजह, तो मैंने ओपन फोरम में ही कह दिया कि हम मदद कर सकते हैं। Okay, so I believe Pradanya ma'am has said something to ask. Yes, Pradnya ji, go ahead. Yes, so again, I have a question here. You said that, for the clients to ask, it's very clear that the scope of work you have to define and, the value addition that you will be giving. But however, when the employees keep on asking for regular appraisals, so that has been happening whether it is a lockdown or not a lockdown, because retaining the team is extremely important. And without a team, it's not possible. So like now also, like when I have not had increment from the retainer clients for last 3 years, I have been incrementing for my team. But that thing is, not adding to the value that my team is giving. They are working on the same scope. Their work has also increased. But So, for me, the cost has increased. Pradnya, would you be able to tell me what's your basic qualification? So I am a BCom MBA. Okay, and how long you've been running this business? The business I'm running for 5 years, and I have worked with in corporate communication for about 10 years. Oh, wonderful. Very nice. But just a quick question. How well are you exposed to diffusion of innovation? Not really, like when it comes to executing or doing it. Let me ask a new question to you. When is the last time you innovated in your business? In terms of process, or like from the solution point, I have been doing that in terms of giving various solutions to the clients. No, I did not ask for clients. I asked for yourself. No, not for self. Not self really. Is you and your business. There's not much work happened on, because I have been since it's an agency, it's just an execution and doing. So there's actually no time to upgrade. I hope you've got your answer. So this upgrade will be for self and the team as well, right? First you have to learn, not learn. First you have to get in a mindset of change. So there are three things, and I'll draw this. This is probably the burning desires first part that I keep talking about. Okay, first part that I keep talking about. All right, the 3 blocks, Pradnya. Right. Okay, and the first block is self. The second block is method, and the third block is finance. I would make, listen to the training program, be in a part of a training program. I'll do all of that. I'll listen to all dunya bhar ka gyan. Okay. But I don't change methods, then nothing's going to change. Are you with me on this? Complete. I think yes, what you're saying, because I've attended a lot of sessions, but correct. Implementation. Why am I saying this? Because I'm also handling a P&L. Not only for a consulting company, I'm handling a P&L for a manufacturing company also. And there are so many projects that we see. तो बंदे सुनते बहुत हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत इधर उधर का ज्ञान लेते रहते हैं, पर तरीकों में बदलाव कर रहे हैं क्या? वही तरीके. तो अगर तरीके वही रखोगे तो रिजल्ट्स कैसे चेंज होगा? So hence it is very important for you to realize that the methods have to change. Now the question here is, in order to change the methods, isn't it important that you start looking at the habits that you have first, then the business, and then change the methods of business? Because unless and until your methods don't change, your business methods don't change.
Yes. So you start working on self, and this is a process. And I'll tell you when it gets tough. Some people will say it is very easy to make money. I believe it is not easy to make money. It is a process to make money. If you are following a process, you will be able to make money. As simple as that, right? But if you really look at it, this journey has to be dropped down like this. Now, when I say diffusion of innovation, what does that mean? So I'm going to take you through the next diffusion of innovation part. Give me a moment, please. जब भी आप कोई नई चीज डालते हो ना, तो वो ऊपर से नीचे आती है. This is law of gravitation. आप ऊपर चीज डालोगे वो नीचे आएगी, right? Law of gravitation. I'm just writing that down. This is value. आपने जब नया चीज काम शुरू किया ना, वो एक एनर्जी थी, वो सारी नई वाली चीजें थी आपके दिमाग में, जहन में, बट आपके पास क्लाइंट्स कम थे. डू यू एग्री? Yes. हाँ. Yes. फिर एक क्लाइंट आया, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो आपके पास क्लाइंट्स भी बढ़ गए. फिर आपने लोग भी बढ़ा दिए, फिर आपने प्रोसेस भी बढ़ा दिया. अब ये मेरे जैसे योगेश पवार ने देख लिया, या प्रज्ञा तो बहुत पैसे बना रही है, डिजिटल में बहुत पैसा बनता है, तो योगेश पवार ने भी शुरू कर दिया. ओके. फिर योगेश पवार ने शुरू कर दिया, फिर यहाँ आते आते प्रज्ञा वेरी हैप्पी, बिजनेस बड़ा चल गया. योगेश पवार ने देख लिया, यार ये योगेश पवार क्या कह रहा है, अब यार मैं भी ये धंधा करता हूँ. तो यहाँ पे ना आपको किसी ने कंपटीशन को टच कर लिया. ओके. फिर किसी और ने देख लिया, फिर, और बाय द टाइम प्रज्ञा हैज रीच्ड दिस प्लेस, दिस इज अ नीड बेस्ड बिजनेस. देन इज दैट ओके? Yes. It has become a need based business from a aspiration based business. It is a need based business. अब मैं आपको अगर बोलता हूं कि नमक आप मेरे से नमक 200 रुपए में खरीदो, किलो आप खरीदोगे? No. मगर मैं आपसे कहता हूं ये हिमालयन नमक है जो हर साल बस 3 ही महीने मिलता है, और आपको ये चाहिए 200 रुपए किलो में, आप खरीदोगे ना? Yes. Yes. सो अगर आप नॉर्मल नमक बेचोगे तो यही मिलेगा, अगर आप हिमालयन नमक बेचोगे तो 200 रुपया किलो मिलेगा. So you have to be very clear that this is where you have to start jumping the S curve. If you don't start something new here, then you will fall into the trap of need-based business. Need-based. You got to again start a S curve. So this is called the jumping the S curve. This portion is called the jumping of S curve. So technically क्या होता है, जब भी बिजनेस शुरू करते हैं लोग यहाँ पे होते हैं. Sorry, I'll just change the colors. Technically when people start, यहाँ पे उनको कस्टमर्स कम होते हैं और प्रॉफिट ज्यादा. यहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट कम. Yes. अगर आपने इस स्टेज पे आपके बिजनेस की स्टैंडर्डाइजेशन पे काम नहीं किया, प्रोसेसेस पे काम नहीं किया, तो ये कस्टमर्स दूसरे के पास जाना शुरू हो जाते. Alright? So I hope I've been able to answer your questions. Yes. It's quite thought-provoking. Start working on yourself. It's a very, very dynamic business that you are in. Start working on yourself. Thank you so much. Pleasure's mine. Thank you. Right. Any other question? Babu Rao Mirze. Haji. There is a question in the Q&A box, sir, that go ahead. How I can improve my efficiency of the company. Okay. I think I have answered this question, but I'll still go ahead and respond to that. Efficiency बढ़ाने का तरीका, unfortunately, impact 4 साल में 2 साल में एक बार हम मार्केट में इम्पैक्ट कर पाते हैं, पर एफिशिएंसी ना रोज का काम है. और एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका क्या है?
कि आप कंसिस्टेंटली इन चीजों पे ध्यान रखो. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू. गिव मी अ मोमेंट. Just give me a moment, 30 seconds. I'll share that with you. Yeah. एफिशिएंसी को बढ़ाने के ये 4 तरीके हैं. ओके, जिसका इंपैक्ट कहां आएगा ये मैं बता दूंगा. वेज टू इंप्रूव योर सेल्स साइकिल. आप हमेशा 24 घंटा ये सोचते रहिए कि मेरी सेल्स साइकिल में शॉर्ट कैसे करूं. दूसरा तरीका, वेज टू इंप्रूव माय मेक एंड प्रोडक्शन इन्वेंटरी साइकिल. अगर कोई चीज मुझे 10 दिन बनाने लग रही है, वो मैं 8 दिन में कैसे बनाऊं. सो समथिंग हैज टू बी फास्टर, बेटर, चीपर एंड इजियर. आप लिख लीजिए, ये फ्रेमवर्किंग है. फास्टर, बेटर, चीपर एंड इजियर. लास्ट इज मैं डिलीवरी को कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि डिलीवरी में इंप्रूव करूंगा तो वो सीधा मेरे पेमेंट साइकिल पे इंपैक्ट लाता है. तो जब तक ये 4 चीजें हमेशा कॉन्स्टेंटली एक बिजनेस ये 4 चीजों के बारे में नहीं सोचता, तब तक ये तरीके बाहर नहीं निकलते. इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग डिजायर, we make sure that the new addition program, by the way, shows all of these methods as well. And the last piece, what I always say is, if you are able to do these 8 parameters right, you will see impact. जो भी आप average out turnover कर रहे हो, इसके कम से कम टर्नओवर के कम से कम 1% क्लियर कट आप साल के एंड में बचा पाओ. ओके, कॉन्स्टेंटली ये 4 चीजों पे फोकस करें. पहली चीज, आई रिपीट, पहली चीज, मैं सेल्स साइकिल को कैसे इंप्रूव करूं, इसका मतलब शॉर्टन करूं. मैं मेक और प्रोडक्शन को कैसे शॉर्टन करूं, उसको क्या ऑटोमेशन लगाऊं, प्रोसेस लगाऊं, स्टैंडर्डाइज कराऊं, सिस्टम लगाऊं. थर्ड, मैं डिलीवरी सिस्टम, मेरी जो कस्टमर को डिलीवरी दे रहा हूं उसका एक्सपीरियंस कैसे अच्छा करूं. और फोर्थ, मैं पैसे जल्दी कैसे कलेक्ट करूं. These are 4 elements that you have to constantly focus on efficiency. और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर. ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू योर पीपल. जितने, या अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग, अगर आप लोगों के काम कर रहे हो, आपके साथ लोग भी काम कर रहे हैं, आपके लोगों की ट्रेनिंग और एक्सपोजर. अगर उनको ट्रेनिंग और एक्सपोजर नहीं मिलता तो इंसान वही करता रहेगा जो वो कर रहा है. अगर वो वही करता रहेगा जो वो कर रहा है तो उसे रिजल्ट भी वही आएंगे, उसके रिजल्ट्स बदलने नहीं वाले. You will not be able to change the results if you don't improve the methods. First of all, before improvement, he needs to be aware कि कुछ है भी, कि इस तरीके से भी करना होता है. अगर ये पता ही नहीं है तो शायद नहीं हो पाएगा. So please don't shy away from investing in your people, investing in yourself, so that you can make methods better in your company. I hope I've been able to answer that question as well. Yeah. Manishji, hope you have got the answer. I think we have come to a closure of the event, sir. We will be taking one more question, which is there in the chat box from Mr. Surinder. Surinder ji is asking कि बिजनेस का प्लान बनाते समय हमें कितने टाइम का प्लान बनाना चाहिए. इससे पहले 5 साल के प्लानिंग पे बहुत फोकस दिया करते थे बिजनेस वर्ल्ड में, बट अब वो दिनों पे आ गया है. सो बेयर मिनिमम 1000 days आई नीड टू बी क्लियर ऑन पेपर. कम से कम 1000 दिन में कहां पहुंचूंगा, ये क्लियर कट पेपर पे होना चाहिए. अगर नहीं है तो भटकते रहेंगे, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है. अगर कोई बदलाव भी आया, जैसे कोविड जैसी कोई चीज आई और जिंदगी वापस शट हो गई, तो एटलीस्ट एक रेफरेंस पॉइंट है कि मैं करना क्या चाहता था और मेरी आज की परिस्थिति क्या है और मैं क्या कर सकता हूं आज की परिस्थिति में वहां पे पहुंचने के लिए. अगर ये रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो शायद पीपल डोंट रीच देयर. एंड इट्स अ वेरी सिंपल फंडामेंटल, यू नो, अगर एक बहुत बड़ा समंदर है और मैं जहाज का कैप्टन हूं, अगर उस जहाज में कैप्टन है ही नहीं तो जहाज कहीं पे भी पहुंचेगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. अगर जहाज है और
कैप्टन भी है और कैप्टन नहीं जानता कहाँ पहुंचना है, तो फिर वो जहाज माशाल्लाह कहाँ पहुंचेगा ये सब जानते हैं। अगर वो जानता है कहाँ पहुंचना है और भूचाल आता है, तो एटलीस्ट 4 साल बाद नहीं, 8 साल बाद वहां पहुंच तो जाएगा, क्योंकि वो जानता है जाना कहाँ है। करेक्ट। सो प्लीज इसे एग्जाम्पल के स्वरूप में मैं ये लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट योर फ्यूचर, you should know how to reach there, and you should be extremely humble to your people and disciplined with yourself, because if you're not having these traits, and if you're not developing those traits, then scaling up is a dream. But if you want to play this as a game, then you need to be abiding by the rules of the game and got to be fit to play that game, right? I hope I've been able to answer all the questions. Yes. Also, can you please share a little, a background that what we do